Today we'll meet Mr. Raghu Rai. He's had a long career as a photographer and photojournalist and a wealth of experience that we all can benefit from. Let's meet Mr. Raghu Rai and find out from him how his journey began as a photographer and a photojournalist. Hello everybody, and we are very fortunate today to have with us one of the greatest photographers of the world, a legendary photographer, Mr. Raghu Rai. He's here to speak to you and tell you from his wealth of wisdom and experience that he has got by hard work and determination and for the love of photography and photojournalism. Mr. Raghu Rai needs no introduction, but I am going to request Sir, thank you so much for giving time to the young generation and helping them to understand the nuances of photojournalism. You think I'm old? Chronologically, maybe, but at heart you are not. No, you are eternal. I would say none of us are old, you are eternal. You see, they talk about contemporary modern art. Yes. What is contemporary? Which is happening right now. And your response to it, which comes instantaneously, instinctively, is contemporary and modern, which is not bound by any lines and forms and textures which are defined by the artist, because there is no space for artist definition in photography, because photography is free-flowing magical experience. So can you tell us, how did your journey begin? I believe you qualified as a civil engineer. Right. And at the age of 23, now let's not debate if it's young or old, but at the age of 23 your foray with photography began. So can you tell us about it? 4 or so. You know, actually my father wanted me to become an engineer. And you see, we were never given choices. Today's generation is free-flowing, they have all the choices and possibilities, much more than what we could ever think of doing, you know. So in any case, I worked with the government for 2 years, which I found very boring. And I came to stay with my elder brother, Paul, who was a photographer and a very good photographer. And he unfortunately passed away last year. But he, you know, had only photographer friends and people coming with photographs, with cameras, with lenses. In those days, even lenses were not so easily available. Cameras were not available. So if anybody got a wide angle, they'll come and say, "Dekho, I've got 28mm. Then everybody will put it on their camera and see, oh yeah, it gives more space. So, you know, we had those limitations. So, but just by chance, I asked my brother, why don't you give me a camera? I'll also take pictures. Not that I wanted to be. So first picture that I took was of a baby donkey in a village, and he sent it to the Times newspaper, because Times newspaper used to print something funny, something ironic, strange or unbelievable on their weekend newspaper half page. So they printed my photograph with my name on it. So when it got printed, everybody said, "Raghu, big deal." I said, "Really?" Because I had no plan to become a photographer. But then when everybody kept telling, "Raghu, this was fantastic, this was fantastic." So I thought, "Chalo, let's see." So I started taking photographs. This is how I started. But the best part was that, you know, I felt that the camera on my eye, suddenly my energies, my mind comes into focus. My energies get together and I can penetrate and see the world more clearly. And that was fascinating for me, you know. Somehow it gave me sense of exploration and well-being, that I am learning and growing, you know, with life around me. And also at the same time, you know, getting published and getting some money out of it. Right. Yeah. So your work, like you said just now, gave you an opportunity to connect to people and explore the various dimensions of life. Yeah. And you're known for this, your books on Delhi, on India, Raghu Rai's India, in black and white color. Constantly you're showing us vignettes and glimpses and slices of life through your eyes. So can you tell us more about this?
ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है दर्शन पाना, है ना, कि कहते हैं जी आपके दर्शन कब होंगे। आप भगवान को भी यही सोचते हैं कि उसके दर्शन कब होंगे। तो फोटोग्राफी मीन्स सीइंग, एंड द एबिलिटी टू सी थिंग्स इन इट्स एंटायरिटी इज दर्शन। तो वो जो दर्शन पाने की अभिलाषा है, उसकी परसूट में, और ये अनकॉन्शियसली हुआ, ये तो अब मैं बात कर सकता हूँ ना आपके साथ, पर हुआ ये अनकॉन्शियसली कि एक अभिलाषा जो दिल में जागी और जो चिंगारी बन के सुलगती रही, होता रहा, बढ़ता गया। और मैं आपको ये बता दूं कि 55 साल हो गए मुझे करते हुए, लेकिन एक तो डिवाइन एनर्जीज जो है और डिवाइन ब्लेसिंग्स बड़ी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। ये बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। आजकल के बच्चे बड़ों को भी ऐसे रफली ट्रीट करते हैं कि हम पढ़ लिख गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। हमारी संस्कृति में ब्लेसिंग्स जो हैं बड़ों की लेना जो है ना, वो डिवाइन एनर्जी बड़ी हेल्पफुल होती है। तो एक तो डिवाइन एनर्जी से अभी मैं 80 के करीब होने वाला हूँ, बहुत दम है मेरे में अभी भी, उसकी वजह से डिवाइन एनर्जी। और दूसरा जो डिवाइन एनर्जी है, सिर्फ वही आपका इंस्टिंक्ट दर्शन का जिंदा रख सकती है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो फिर मैंने फोटोग्राफी में ये देखा कि मैं बड़ी मेहनत करने लगा कि अब मैं अच्छा काम करूँगा, फिर जाके सुबह से लेकर शाम तक फ़ोटो खींचते रहना, फिर आना, फिल्म प्रोसेस करनी, तो देखना यार कि कुछ इतना अच्छा तो आज नहीं बना है। क्यों नहीं बना? कि मैं मेहनत कर रहा हूँ सोच के समझ के, पर क्रिएटिविटी जो है, दर्शन जो है, वो स्पिरिट के वो होते हैं जो उस ब्लेसिंग से आते हैं। जब आप खुले दिल से रिसीव और परसीव करते हैं, तो मेहनत करना एक अलग प्रोसेस है, पर उसमें मेहनत में एक खुला दिल, खुला दिमाग, खुली हवाएं आएं जाएं और आपको समझाएं कि मैं यहाँ हूँ। ये पार्ट जो है बच्चों को, और कमाल की बात ये है, इसमें ना कोई गरीबी का ना अमीरी का सवाल है, ना छोटे का, ना बड़े का, ना मोटे का, ना पतले का। ये हवाएं जो हैं उनके लिए आती हैं जो सच्चे प्रेम भरे दिल से। देखिए, धरती जब टेंडर होती तो उसमें से बीज उगता है। तो ये ऐसी सी बातें हैं कि अंदर टेंडरनेस और गुडनेस रहना बड़ा ही कीमती एलिमेंट है। फिर चाहे आप फोटोग्राफर बने अच्छे, या राइटर बने, या आर्टिस्ट बने, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये बात, लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। स्मार्टनेस टेक्स यू नोवेयर। तो लकीली मैंने जिंदगी उस लेवल पे जी है। ब्यूटीफुल। सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज जो इंट्रिंसिक हमारे अंदर गुडनेस और ऑथेंटिसिटी और एक कॉलिंग और एन एस्पिरेशन फॉर समथिंग गुड, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, if that is guiding our life, things will fall into place. Absolutely. और जो मैं पूरी तरह नहीं अभी भी कहा वो ये है कि वो क्रिएटिव ब्लेसिंग्स और वो क्रिएटिव एनर्जी वो सब के लिए अवेलेबल है, चाहे कहीं का भी, कोई भी, कैसा भी हो। और सिर्फ ये है कि उसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस, थोड़ा प्यार, थोड़ी मैडनेस, सारे इनके जब ये सारे मिलते हैं और उसका जो रस बनता है वो पीने पिलाने की आदत हो, तो तब खुलती है जिंदगी। और सबके लिए है, पर किसको मिलेगा? जो अभिलाषी है, बस जो दर्शन पाना चाहता है। सबको नहीं मिलने वाला, होते हुए भी नहीं मिलता, क्योंकि सामने से गुजर जाता। आप अभिलाषा ही नहीं रखते ऐसी पाने की, वो प्राप्ति की।
लाइक जैसे आपने कहा रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ फोटोग्राफ. आई वांट टू आस्क यू, आपको मौका मिला है अपने करियर में बहुत बारी पिक्चर एडिटर या विजुअलाइजर फोटो एडिटर बनने का, लाइक संडे में और इंडिया टुडे में. बेसिकली फोटो एडिटर का तो जिम्मेदारी है सबकी फोटोग्राफ्स और अपनी में से चुनना. तो उसमें आप इस पे थोड़ा और प्रोसेस पे बताएंगे? प्रिसाइसली. किसी की भी कोई भी फोटोग्राफ आती थी मेरे पास तो मैं उसी इंस्टिंक्ट और ईमानदारी से चुनता था कि जो एंड व्हाई बिकॉज योर फोटोग्राफ इज एज गुड एज मच इट कैन स्पीक फॉर इटसेल्फ. आजकल लोग कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी करने लग गए हैं क्योंकि वो जी स्ट्रीट फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी रेपिटेटिव होगी ऐसा कहते हैं. दूसरा के आइडियाज से तस्वीरें, सिचुएशंस बनाना, क्रिएट करना, टेलर करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब करना. पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बता दूं, द पर्पस ऑफ फोटोग्राफी, द पर्पस ऑफ फोटोग्राफी इज टू कैप्चर द टाइम वी लिव इन, which cannot be replaced by writing, by painting, by any other art form. क्योंकि जो सच आपने कैप्चर किया है आज वो कल नहीं सामने दिखाई देगा. वो फिजिकल, देखिए मुझे 55 साल हो गए. मैं जब दिल्ली की तीसरी बुक एडिट कर रहा था तो सडनली मुझे रियलाइज किया मैंने कि बहुत सारी दिल्ली की सिचुएशन जो थी जो मैंने 40 साल 50 साल पहले खींची थी, they don't exist the same way anymore. Even physical realities have changed. The truth changes, as we all know. So the purpose of photography is to capture the time we live in because this is going to be the visual, the photo history of tomorrow. तो ये हमारी जिम्मेवारी है. और अगर आप साक्षात देखने की क्षमता रखते हैं और इतना बड़ा दर्शन करते हैं तो वो तो बहुत ही कीमती है. पुराने ज़माने के जो शुरू के फोटोग्राफर्स थे उन्होंने भी जो हमारा देश उन्होंने फोटोग्राफ किया, बॉर्न एंड शेपर्ड ने या राजा दीनदयाल ने पोर्ट्रेट किए, हम देखते तो कहते अरे तो ऐसा होता था. तो ऐसा जो होता था वो ना पेंटिंग में दिखाई देगा ना राइटिंग में दिखाई देगा. यू कैन, देखिए अ पेंटर हैज़ बीन थ्रू 3 different experiences of same kind or 5 different experiences. So has a writer. He can amalgamate and put them into one experience and enhance it and make it so powerful. Photographer को तो एक ही moment है, उसी में कैप्सूल करके उसने वो मैजिक पकड़ना है ना. तो उसकी जिम्मेवारी मैं आपको बताऊं राइटर से और आर्टिस्ट से भी बड़ी है. Either you got it or you lost it. And even if you got it, does this have the same dimensions? All these put together. तो ये जो पर्पस फोटोग्राफी का है इतना कीमती है कि this art or that art comes much later. Even philosophies are born later on. First, it's a moment of experience and realization that you capture, and then you say, oh my God, this is what it is. ठीक है कि नहीं? तो ये बातें जो हैं ये बच्चों को समझनी चाहिए. हमें इतने सालों लगे हैं ये ढूंढने, समझने में और कैप्सूल करने और वर्ड्स में लाने के लिए. तो आज तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो बच्चों में तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए कि पूछिए. तो ये मैंने अर्ली इन लाइफ जान लिया था कि तेरी तस्वीर जो है अपने आप जिंदा टाइमलेसनेस में जिंदा जी सकती है. तो बात है तो काम जो है वो बड़ा कीमती चीज़ है. इंस्टिंक्ट जो है उससे आगे ले जाता है. तो मेरी तस्वीरें जो हैं मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने इंदिरा गांधी पे भी बुक की, इट हैड एवरीथिंग इन इट. द वे शी वाज लव्ड, the way she was revered, the way people hated her, the way people did chamchagiris, every expression that was there around her. And I wanted it to be that wholesome experience of a leader. तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मेरी तस्वीर जो है आज किसी कल मर गई तो मुझे कौन पूछेगा. तो that
visual history which carries this kind of sensitivity and responsibility is very important. There's so many things that we can learn from Mr. Raghu Rai. What a lifetime of learning and experience and engaging with reality and documenting it through his camera. There's much more to learn from him, so do come back and watch the second part of this lesson.